Assalamu alaikum. Topic for today's session is Jolly Phonics Pupil Books vs Workbooks. आपने यकीनन देखा होगा बहुत सारे एड्स हैं जिनमें जो है वो रीडिंग और राइटिंग से रिलेट बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है. यहाँ यू कैन टीच योर चाइल्ड रीडिंग एंड राइटिंग एट होम इन स्कूल एंड इफ़ योर चाइल्ड इज़ हैविंग एनी डिसेबिलिटी or any problem in reading and writing, so what books are best for your child and how you can use them. So let's have a look at both of the products together. So these are going to be our discussion points for today's topic. Introduction of both products, comparison, and let's see that this comparison is in term of contents कि दोनों के अंदर क्या contents available होती हैं, lesson plans होते हैं या नहीं होते, teaching objectives क्या हैं, both books are going to teach reading or not, comparison in terms of cost and availability as well, comparison in terms of teaching reading, and understanding that if we can use blending practice while we are working on the workbooks. So this is the introduction taken from the website, Jolly Learning UK website, so that you could know that how these books are being organized. So we are having 7 books, and these are very small and very attractive in fact, and you can practice phonics skills, and lots of tracing and coloring is over here as well, and it is covering all 42 sounds of Jolly Phonics program. So basically these are the refresh editions from the previous ones, and lots of things are being changed in these editions. In this old version you can see that title is different as compared to the new colorful version, and there are other things as well, like you see that here we have got capital letters, but capital letters are no longer here in this version, and we can also see that pictures are same, and other concepts are same, even the storyline is same. So let's have a look at the pupil book. What is in the pupil book? You can see that pupil books are 3 in number, starting from 1 till 3, and in one single pupil book 1 they cover all 42 sounds, and the format tells you that how you are moving from sound to the letter formation, then blending and segmenting. And important thing is that we have got the lesson plans for each and every page. Now let's have a look at the contents. Both are covering 7 groups of sounds. यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी से भी कंसल्ट करें वर्कबुक्स के बारे में, ऑडियो बुक्स के बारे में, so you are going to know that they are same in terms of introduction of the sounds. जो साउंड 42 साउंड प्री बुक 1 के अंदर कवर की जाती हैं एक बुक में, वो यहाँ पर 7 बुक्स में कवर करवाई जा रही है. इसी तरह प्री बुक 1 जो है उसके साथ और जो उसकी सीरीज़ है 2 और 3 का जो कंटेंट है वो आपको वर्कबुक्स के अंदर नहीं मिलेगा. वर्कबुक 7 जो है उनमें जहाँ तक कंटेंट कवर हुआ है वो सारा जॉली प्री बुक 1 का ही कंटेंट है. Lots of tracing and coloring practice है, extra practice pages हैं, but we don't have the lesson plans for workbooks. We don't have any teacher resource material. Well, if you go look at the website, there would be other resources, parent teacher guides, but not like lesson planning for each and every sound. और अगर आप ई बुक 1 को देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती हैं, और आपको लगता है कि आप इनको बहुत इजीली जो है वो करवा सकते हैं. वन मोर थिंग, जब हम प्री बुक 1 में एक साउंड के लिए सिर्फ एक ही पेज दिया गया है, लेकिन जॉलीफॉन्स की वर्क बुक्स हैं वो एक साउंड के लिए ज़्यादा पेजेस हैं, मोर देन 1. स्टोरी का पेज अलग है, प्रैक्टिस पेज अलग है, आगे असेसमेंट्स के पेजेस भी इंक्लूडेड हैं. So it's another attraction for the teachers who are using Jollyphonic workbook. But it's very important to understand that all of the world, it is famous, Jollyphonic book is famous for teaching blending and sounding specifically for bilingual students. वो स्टूडेंट जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो जॉलीफोनिक प्यूपिल बुक्स हैं. Even when I went to the UK and visited some schools, they were using Jollyphonic pupil book.
for the native English speakers as well. They were not using workbooks, and I noticed that they were not only English students. There were other students from there were students from other countries like from Bangladesh and from Africa and from other Asian countries. So they were all using they were all working on the pupil box. Now let's have a look at teaching objectives. Both are designed for age 4 plus. In some schools, Jolly Funny workbooks are used in playgroup, so it's not recommended for that level because it has a different approach, and we need to be very much careful when we are deciding selecting workbooks for our children, because the age limits are written over there on the books, and the authors have done this after doing lots of research on the students. जब कोई चीज़ डिज़ाइन की जाती है, पब्लिश की जाती है, तो उसके पीछे जो है वो एक लंबा सा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, जिसमें इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, प्लान किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, इसके बाद ट्रायल्स होती हैं और उनके बाद एरर्स को रिमूव किया जाता है और एक पर्टिकुलर एज लेवल के लिए उस बुक को डिज़ाइन किया जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि देन व्हाट इज फॉर द प्ले ग्रुप के लिए क्या चीज़ अवेलेबल है। So there are lots of things that are available for playgroup, like there are my jolly phonics this is when it comes to very young children, they are supposed to enjoy sound, they're supposed to do coloring and practicing, but they're not able to form letters on a very small scale. वो बड़ा बड़ा लिखते हैं और उसको बड़ा enjoy करते हैं, and they don't do blending. So blending भी उनके लिए recommended नहीं होती। अगर आप देखें तो वर्कबुक 3 onward जो है जरा जो वर्ड्स हैं उनकी complexity change होनी शुरू हो जाती है। So Jolly English, My First Letter Sound, and there are some other materials available in the market for your first year of preschool or playgroup. But be careful, workbooks are not for playgroups. And if you are using them in your nursery or ECC 1 or maybe ECC 2, then you need to know that if the children are of age 4 plus or not. So there you can have some blending and segmenting in the workbook, but it's not very much specific, very much explicit, and not there in the lesson plan. So sometimes it is noticed that in the school, teachers major focus is on coloring, practicing letter formation, and writing practices. ज़्यादातर जो schools यूज कर रहे हैं उसमें ये है teachers are very much occupied in coloring, एक homework page भी चला जाता है, there are other pages as well. So they're trying to develop their fine motor skills. लेकिन जो उनकी ब्लेंडिंग है और इसके अलावा जो आगे फर्दर एक्टिविटीज हैं वो नहीं हो पाती है वर्कबुक्स की वजह से। Well, in the pupil books you can see there are lots of things for blending, lesson plans are there, and then we have got pupil book 2 and 3 for extensive practice, and then we know that how to start working on the original level of the reader once they are done with the first 3 groups of letter sounds. So your books are specifically designed for a speedy reading practice. One page, only one page per day. So you don't have to spend whole week for just one sound. So its methodology, its approach is totally different than workbook. वर्कबुक की अप्रोच जो है वो डिफरेंट है और प्योर बुक्स की अप्रोच डिफरेंट है। प्योर बुक्स जो है वो रीडिंग को एक बहुत जल्दी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस तरह की बुक्स डिजाइन की गई हैं कि आप एक साउंड करवाएं, फिर दूसरी साउंड करवाएं, फिर तीसरी साउंड करवाएं और कोशिश करें कि बच्चे जो है वो वर्ड्स की ब्लेंडिंग के ऊपर आ जाए। So let's have a look at the lesson plan of uh, pupil books. See that how many steps are over there. Letter sound is introduced, flashcards, story, action, formation, blending, sounding, word bank, dictation, further ideas. So you see it's a complete lesson plan which is available for the teachers, but in case of the workbook, we don't have such planning. We don't have the word banks available as well. So the teachers who are using workbooks from the last many years, they're just trying to focus on uh, writing and tracing and coloring practices, and their students are lacking in the reading and blending practice. It is noticed, and
I'm trying my best to tell them that to use pure books for reading and blending practices. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है ऑरेंज एंड रेड रीडर लेवल पर जल्दी से आ जाए, तो उसके लिए जो है आपकी डिक्टेशन प्रैक्टिस, वर्ड बैंक और ब्लेंडिंग जो प्री बुक्स में दी गई बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो एकेडमिक ईयर है उसमें अगर आप वर्क बुक्स जो है वो यूज कर रहे हैं, देन एटलीस्ट देयर शुड बी वन बुक अवेलेबल विद द टीचर्स, प्री बुक वन, so that they could help with the students. So you see that the approach is totally different, organization is totally different, and objectives are different as well. यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारी जो ये वर्क बुक्स हैं, ये इट वाज द फर्स्ट एवर बुक डिजाइन फॉर teaching Jolly Phonics program after the handbook, but pupil books are very much new. Not in that sense. I mean, it was an improved version of Jolly Phonics reading program. Again, if you look at the cost and availability, particularly when it comes to our country, Pakistan, you would see that books are mostly available in two versions, like black and white version and colored versions. And uh, you see that they are mostly available, and the cost is low as compared to the complete sets of workbooks 1 till 7. In some schools, they teach this workbook 1 and workbook 2 and 3 in one level, and then workbook 4 and 5 in other level, and then workbook 6 and 7 in other level. And when they are using just two books in one level, and then they use some other books and make their own worksheet, so there is the blending of resources. जब इतनी ज़्यादा ब्लेंडिंग होती है रिसोर्सेज की, तो प्रोग्राम जो है उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती, स्कोप एंड सीक्वेंस कवर नहीं होता, और बच्चे जो है उसको एक लिंक नहीं बना पाते कि उन्होंने कैसे एक पूरी चीज़ को साउंड को कवर करना है। हमारे जो क्रैश कोर्सेज होते हैं समर के, विंटर के, उनमें हम 2 मंथ्स के अंदर, 20 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर जॉली फॉनिक बुक वन को यूज करके फॉरन 42 साउंड करवाते हैं। समटाइम्स ये 1 मंथ में भी कवर हो जाती हैं। कोविड के अंदर बहुत सारी होम स्कूलिंग थी जिसके अंदर जो है हमारी यही थी अप्रोच, हम 2 मंथ्स में बुक वन के लिए बच्चों को ब्लेंडिंग पर ले आते थे। वो बच्चे जो इसी 3 के अंदर हैं या ग्रेड 1 में हैं, लेकिन वो अगर रीडिंग नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए बेस्ट अप्रोच जो है बुक वन है। अगर आप उनको बुक वन कवर करवा लें, देन दे वुड बी एबल टू स्टार्ट रीडिंग थ्रू द रीडिंग स्कीम। बट if you are going through the workbook 1 till 7 for the adults or for the younger ones, you won't be able to have a very quick approach because they have to do lots of work, or maybe they're skipping them. So you see that when it comes to book 2, we have got model sentences, picture descriptions, and lots of other things are available. But workbook 1 till 7, the whole program covers only the 42 sounds. We can teach blending through the word bank workbook, but we don't have more words. In the Pupil resource book, they've got lots of words available. So sometimes they are only 4 words. मिसाल के अगर teachers सिर्फ ये 4 words करवा रही हैं, house, cloud, count, round, shout, बच्चे जो है वो उनको मेमोराइज कर लेते हैं। और टीचर्स के पास भी नया वर्ड बैंक अवेलेबल नहीं होता, टीचर रिसोर्स बुक नहीं होती, और उसकी वजह से जो है वो रटा जो है वो लग रहा होता है और नहीं समझ में आ रहा होता कि बच्चे रटा लगा रहे हैं या साउंड्स को समझ के वर्ड्स की बिल्डिंग कर रहे हैं। तो आप देखें कि जो आप प्यूपिल बुक्स है उनमें आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा रिसोर्स बैंक है, वोकैबुलरी है, डिक्टेशन की गाइडलाइंस मौजूद हैं, मॉडल सेंटेंसेस हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शंस हैं। So it's a sample book list designed out of uh, lots of experience and practice in this field. You can use these books, Jolly English, or My First Letter Sound, or Fun Phonics Packs for Playgroup, age 3 plus, workbooks, activity books and readers for age 4 plus, KG, book 2 and 3, grammar 1, and this scheme is very much helpful in our context. And then in grade 1, some schools are using grammar 1 in grade 1, and some schools are using grammar 2 in grade 1 for dictionary and other reader levels. So this is sample scope and sequence. 1 sound per week at the age of 3 plus, at the age of 4 plus, 3 to 4 sound per week, and at the age of 5 plus. This is how you can divide your whole week. Day 1 phonics, day 2 grammar, day 3 reading comprehension, day 4 independent writing, and day 5 review and assessment.
So it is crucial to know that what to select for your child. अगर आप किसी स्कूल में है, कि स्कूल टीचर है, या आप होम यूज के लिए बुक्स को सिलेक्ट करना चाह रही हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी बुक यूज कर रही हैं, जिसके आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपका ऑब्जेक्ट बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव करना है या ब्लेंडिंग रीडिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करना है। अगर आप वर्कबुक सिलेक्ट कर रहे हैं अपने स्कूल की, देन यू नीड टू बी केयरफुल। वर्कबुक का जो सेट है 1 से लेकर 7 तक, ये आपको एज 4 में स्टार्ट करवाना है और एज 5 से पहले इसको कवर करना है। आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, इसका आपके प्रोग्राम की कंटिन्यूटी, स्कोप और सीक्वेंस खत्म हो जाता है। और जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, ये आपका एक होल वीक का जो है वो प्लानिंग को कवर कर सकता है। ये अगर आप इस बुक 1 कवर कर लेते हैं, इसी 1 के अंदर, इसी 2 या केजी के अंदर आप जा रहे हैं, आपका बुक 2 मौजूद है, तो उसके अंदर आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं। बुक 2 आप करवाएं, उसके बाद जो है फोनिक लेसन करवाएं बुक 2 में से, या आप ग्रामर बुक में से करवाएं। इसके बाद ग्रामर लेसन करवाएं, जिसमें कैपिटल लेटर्स आ जाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स आ जाते हैं, मॉडल सेंटेंसेस आ जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाएं रीडिंग स्कीम से, इंडिपेंडेंट राइटिंग, देन अगेन रिव्यू एंड असेसमेंट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, ये आपकी जो कुछ टिप्स हैं, ऑलवेज कंसिडर द एज ऑफ योर चाइल्ड। और अगर आपका जो स्कूल है वो एज अप्रोप्रिएट मटेरियल नहीं यूज कर रहा है, रीडिंग स्कीम नहीं यूज कर रहा है, तो आप उनसे डिस्कस करें, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम व्हेन यू जस्ट वॉच एंड सी दैट हाउ द थिंग इज गोइंग टू बी वेरी मच अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल। अगर एज अप्रोप्रिएट मटेरियल्स यूज नहीं हो रहे हैं, तो यू नीड टू गो एंड टॉक टू देम एंड यू नीड टू टेल देम, बिकॉज एज इज रिटन ऑन द बुक्स। अगर कोई एज 4 का मटेरियल एज 3 में करवाया जा रहा है, तो you need to talk to them because it's not designed for them. और और अगर आपका बच्चा जो है वो रीडिंग एंड राइटिंग सीखना चाहता है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया, ग्रेड 1 में है, उसको इंडिपेंडेंट रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आ रही, you need to start from the first step, that is pupil book 1 and level 1 readers. It's not like that you have to buy lots of telephone materials. It's very easy to teach reading. Very few materials can be used, like you can have blending boxes and dictation sentences to cover steps and stages of telephonic program. To know more about the telephonic steps and stages, you can see and watch our other videos and our courses uploaded on the website. So if you are still worried, you can consult and you can discuss whether you are a teacher or whether you are a homeschooling parent.